So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel that is Naveshik Bharat Talks. And this is your own friend Bharat. So ओवरऑल आज हम स्टॉक्स ऑन रडार जो कि हम वॉच लिस्ट का रखने वाले स्टॉक्स हैं या जहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा देखने को मिला है, मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है या ओवरऑल ईओडी डेटा के बेसिस के एनालिसिस के ऊपर जो स्टॉक्स मतलब शॉर्टलिस्ट हुए, फिल्टर हुए एज पार्ट ऑफ माय होमवर्क, I definitely try to share it with you guys also so that you can learn also. इंटेंशन इज नॉट कि आप लोग उसको ऊपर ऑर्डर पंच करें वो सब करें बिकॉज वो चीज़ किसी को भी क्लैरिटी नहीं है इंक्लूडिंग मी एनालिसिस इज वन पार्ट ऑफ इट एट द सेम टाइम वंस यू सी इनटू द लाइव मार्केट्स यू हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू कंफर्म योर व्यू. हम लोग जो यहाँ पे बनाएंगे एक व्यू बनाएंगे एक ओपिनियन बनाएंगे मार्केट में जो है उस प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के बाद ही देन ओनली यू शुड बी एक्टिंग and you should be acting completely based on your financial consultant's advice because I don't provide tips and all that, and I never believe in also sharing buy this buy that sell this sell that at this thing because everybody's risk appetite is different, everybody's risk profile is different, and everybody's time horizon to hold a particular stock is different, and their trades may be different. There might be some investor or they might be trader, so it becomes very you know irrational on my part to suggest anything. And I request humbly with folded hands to each one of you who is watching this, recording, that please don't ask me which stocks to buy, at what level I should be buying, whether I should be selling this and all that, because I am not the competent person to analyze on your own behalf. So with this, let's get started. तो आज मैंने अभी अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अभी शेयर किया है चार्ट्स को. काफ़ी चार्ट्स जो है डेली वंस आई गो थ्रू दिस होमवर्क एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, so lot many charts get filtered based on that scrutiny of the charts at EOD और वीकली होमवर्क बेसिस. सो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अभी ट्विटर पे पोस्ट की मेरी दो ऑब्जर्वेशंस. एक तो CNX IT में जो है वो मोमेंटम थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन नियर द रेजिस्टेंस पीछे काफी टाइम से हो रहा है, 5-7 दिन से. तो ये लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि शायद ब्रेकआउट आपके ऊपर की साइड पे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि काफी ज्यादा कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के पास हुआ है, विच इज अ गुड साइन. सो IT stocks can be kept on radar, and they might be performing exceedingly well in days to come if all this view holds good as per the follow-up price action. सेकेंड जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आप लोग देखेंगे तो March 16 को कीप एन आई ऑन टेक्सटाइल स्टॉक्स इन डेज टू कम. तो उसके लिए आई हैव जस्ट पुट अ रिमाइंडर आल्सो, एंड देयर वी हैव डिस्कस कि मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम दिस वीक, we can see uptrend resumption, and it looks like early signals of that are being clearly visible on the charts. So I'm trying to share what charts are conveying to me, or what I can understand from what the charts are telling to me. So it's not like a personal opinion, it's not like that I feel so I am sharing it. It's purely based on the chart observations. What charts are telling to me is what I am trying to share here. So let's get started now. Let me take you through the screen, and we will discuss certain stocks where the price action and the momentum has confirmed certain good structures. तो पहला जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज या RHIM. इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले भी शेयर कर चुका हूँ व्यूज कुछ दिन पहले. एंड एट द सेम टाइम जो अगर आप देखेंगे, so let me remove every indicator and all that information का यूज. सो आप देखेंगे तो पर्सनल डिस्क्लोजर ये है कि आई एम आल्सो कैरिंग दिस पोजीशन एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज इन अर्लियर. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस वॉल्यूम एक्शन इज अगेन पॉपिंग अप. काफी ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ जो है ये ऑन 16th of March की जो कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हायर लेवल्स पे काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट इट वाज लाइक डिसेंट वॉल्यूम्स. तो आज फिर से वो वॉल्यूम्स थोड़े से देखने को मिल रहे हैं, और कंसोलिडेशन भी जो है नियर द रेजिस्टेंस जोन हो रहा है. 603 का जो है आज इसने हाई लगाया, डे हाई, बट उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है.
So once it closes above 615, 620, then probably it can give you a decent 4 to 5% returns in a very short span of time is what charts are conveying. मोमेंटम भी अच्छा है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, सो इट कैन बी केप्ट ऑन रडार. सेकेंड, जैसे मैंने आपको अभी आईटी सेक्टर में मोमेंटम वापस आता हुआ बोला है, तो उसके बेसिस पे टाटा एलेक्सी इज वन ऑफ द माय फेवरेट पर्सनली फेवरेट स्टॉक्स. तो अगर आप टाटा एलेक्सी में देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो ये जोन है, दिस इज प्योरली अ ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन. यहाँ पे पहले इसने ब्रेकआउट की कोशिश की, नहीं हुआ. यहाँ पे सेकेंड टाइम नहीं हुआ, लेकिन थर्ड टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट. फाइनली उसके बाद इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, राइट. सो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन भी है. एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऑन द वर्ज ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है. तो इन केस अगर हम लोग 75, 50, 7600 आने वाले दिनों में या कल अगर हम आवरली बेसिस पे उसके ऊपर क्लोज देते हैं, तो देन डेफिनेटली इट इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर रिक्लेमिंग इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई. वॉल्यूम बिल्टअप भी है, अगर आप देखेंगे तो आज वॉल्यूम्स भी अच्छे दिख रहे हैं बीच में. तो दिस कैन बी केप्ट ऑन रडार. As IT sector stocks will be doing well, so Tata Elxsi will be outperforming for sure based on the relative. Third is your Adani Gas. So Adani Gas is also looking on the fresh, verge of a fresh breakout. अगर आप देखेंगे तो ये जो है एक आपकी काफी अच्छी डिमांड जोन थी, या ब्रेकआउट रीटेस्ट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इसको यहाँ पे आके रीटेस्ट किया फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, यहीं से बाउंस लिया है, और फाइनली अभी एक रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन के आसपास में इट हैज मैनेज्ड अ क्लोज. सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि द मोर वी आर denting towards the supply zone, the supply zone gets weaker. So it's just a matter of time. It might be, it might be consolidating here some more time, or it can go there and again come back with and do some sort of consolidation. That is not predictable at upfront. So prediction नहीं है यहाँ पे. You have to react according to what price action suggests you as and when it happens. अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देते हैं, तो देन प्रोबेबली बेस्ड ऑन दिस पैटर्न टारगेट, तो प्रोबेबली 200 250 पॉइंट्स upside potential opens up after the fresh breakout. So after this is your opening up theme, Chalet Hotels. So decent momentum has been witnessed today, along with the volumes as well. So you can see here it's more like there are couple of patterns which are visible to me as per the naked eye. So if you're a patterns guy, you will be seeing here as a cup and handle breakout also, and you can see here a ascending triangle breakout as well. So it's just on the verge of these pattern breakouts. So high possibility and probability and of the fresh breakout. So it can be kept on watch lists. Then I will go for textiles, as I have showed you in my Twitter handle as well. I've recently tweeted just a couple of minutes back. So textiles can be kept on radar. So there are two stocks within this space which are, coming on my manual screening. I normally screen every stock manually. I don't use any. So here also, if you are seeing the descending channel pattern breakout is on the verge of. So it is highly likely that it can see first like 900 plus, the immediate short term, and can see 4 digits in days or weeks to come. This can be also kept on radar. Finally, from this space only, from textiles, I have got Gokaldas Exports, which is looking very strong on the charts. And if you see here, again, after a very decent base formation of rounding bottom, it's again showing the signs of high probable breakout, which can be on cards. So this also looks pretty good, chart structure wise as well as price action wise, backed up with decent volumes. Momentum is also clearly visible. So high probability, credit can turn out to be. So let's keep it on watch list and monitor the price action. Don't preempt any breakout. Just keep these on the watch list.
And finally, as per the price section, react to what price section suggests, rather than, or take your financial consequence advice. Based on that, you can take your own call what needs to be done. So last and not the least for today's watch list will be from media space TV18. So TV18 has also, retested its breakout area or breakout zone, and a couple of times here also, and second time here also. So you can call it as a double bottom also. From there, now it is gaining the momentum and the strength, and it is clearly visible on the charts. Volumes are also decent for today. So it pretty much looks good on cards. Once it manages a close above 77, 78, then probably three digits, potential upside, probable milestone opens up. So we can see triple digits in the near term on PV18. So this is all what I had today to share with you based on my screening activity as a part of my daily homework. Hope you these inputs are adding some value to your learning. सीखिए, समझिए और फिर उसके बाद में पैसे के बारे में सोचिए। सबसे पहले ये मत सोचिए कि ये स्टॉक्स हैं, इसको ऑर्डर पंच कर देंगे तो पैसा बन जाएगा। आपको पैसा बनाने से ज़्यादा ये सीखना चाहिए कि आपको लर्निंग करके उसको समझकर आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। That should be your first and foremost goal, because with that intentionally only I am bringing this all to you in a very simplified manner. So I normally do this homework, but my intention is here to share with everybody on a broader scale, so that each one of us can learn together. और लर्निंग के बाद में अगर आप लोग उस चीज़ को समझ कर आपके लिए क्या काम करता है उसके बेसिस के ऊपर अगर आप काम करेंगे, तो दैट विल बी a added advantage to your learning as well as execution. Thanks guys, take care, and if you are liking or getting benefited out of the content, do not be shy to share, like, and subscribe the channel with your family and friends who are into the markets. Thanks all, take care, good night.